Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to another Career247 video. This one on the recent going on between Russia and Ukraine. Now, if you haven't been keeping track of it, which I would find very surprising because it's been all over social media, yeah, Ukraine dealt Russia a very powerful and unexpected blow. Ukraine smuggled in a bunch of drones via these cargo trucks and hidden compartments, and it got near some air bases, and they popped out, they went off, and insane stuff happened. Now, we're going to watch this video. Link to the video will be in the description down below. What I'm going to say before we even watch this is, the world saw the effectiveness of this attack. I think every country now that is close to or has a border with a foreign power that they are in conflict with, India and Pakistan, now need to worry about this happening. The whole world saw it. It's not just about sending off drones from your own country now, which a lot of people have been doing up till this point. Now, it's it's a Trojan horse. I think every single country needs to worry about this, and specifically India. India, I think, needs to worry about this. You never know. You just never know. Anyways, again, link to the video will be in the description down below. Also, PD10, everybody. PD10, use code PD10 to get maximum discount. PD10. Yeah, insane attack on Russia. Nuclear bombers destroyed. Insane stuff. Let's get into it. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कभी $2 बिलियन के न्यूक्लियर बॉम्ब। What is this? What is this spider? What is Putin doing? सेकंड में डिस्ट्रॉय होते हुए देखे हैं, नहीं देखे मैं आपको 2 दिखाता हूं। billion? इधर आप It देख was- that was the पाओगे, ये amount? फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। नीचे Yeah, and the amount of footage all over social media of this, there's footage of the freaking drones taking off and going from the trucks. There's some, hopefully he doesn't show it, but there's some footage of individuals going into the trucks themselves and then exploding because the trucks either the drones were set up to do that ahead of time. The trucks are set up to do that ahead of time, or there's something, something false happened. But yeah, there's some insane footage going around. जो ये प्लेन दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है। ऐसा कोई भी प्लेन भारत के पास नहीं है। गिनती के 2-3 कंट्रीज के पास ऐसे बॉम्बर्स हैं, और यूक्रेन ने सस्ते से ड्रोन भेजकर रशिया के अंदर ये सारे जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं सब डिस्ट्रॉय कर दिए। एक एक करके आप देख पाओगे सभी जो ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं। टोटल जो इनकी कॉस्ट अगर हम देखें, यूक्रेन खुद कह रहा है $2 बिलियन के आसपास की है। 40 इस तरीके से Wow. एयरक्राफ्ट रशिया के Another notable note, it's come out that Ukraine never alerted anybody of this ahead of time. ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय रशिया से, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये तो विजुअल है आफ्टर की। ड्यूरिंग जब ये अटैक हो रहा था उसकी भी वीडियो सामने आई है। इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ये जो वीडियो है ये एक ड्रोन ने रिकॉर्ड करी है। Wow. ये अटैक करते टाइम यूक्रेन की सरकार ने ये वीडियो रिलीज करी है। ये इधर आप देख पाओगे, ये है Tu-95 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। इसकी जो लोकेशन है ना जहां पर ये पड़ा था रशिया में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यू विल बी इवन मोर शॉक्ड कि रशिया के इतने डीप जाकर यूक्रेनियन ड्रोन्स ने ऐसा अटैक किया है। और मेरा मानना यह है कि एज इंडियंस हमें इस अटैक को प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कल को हमारा कोई दुश्मन देश भी ऐसा अटैक हम पे प्लान कर सकता है। He agrees with me. He agrees with me. Like I said, man, this has shown the world the effectiveness of something like this. So nations need to build up defensives, local defensives at every air base, basically now at every base now, to have the potentiality of shooting down a drone. I don't know. Like how do you even defend against this? क्योंकि अगेन जो स्ट्रेटजी है ये कमाल की है। इधर आप देखोगे, सस्ता सा ड्रोन आया, ये रशिया का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर इस अटैक को हम वाइड एंगल से देखें तो एक रशियन सोल्जर ने एक छोटी सी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है जी रशिया की Speaking of Russian social media, I'm not going to name the site or anything, but I perused over on the Russian and it's some interesting stuff going on over there.
फील्ड। ये वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, और जो पूरा एयरबेस है यहाँ पर भी अब कुछ इतना खास बचा नहीं है। और ये मत सोचिएगा बस ये एक अटैक यूक्रेन ने किया है रशिया पे। रशिया के लिए मैं कहूंगा आज का दिन एक ब्लैक डे साबित हुआ है रशियन मिलिट्री हिस्ट्री में, क्योंकि ऐसे न्यूमरस अटैक किए हैं यूक्रेन ने ऑल ओवर रशिया। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जो ये रशिया का बॉम्बर है इस पर यूक्रेन के ड्रोन ने जब अटैक किया होगा तो ये ड्रोन का ही अटैक है, क्या पता रिपेयर करके कुछ ये वापस ठीक हो जाए। नहीं, मैंने डिटेल में यूक्रेन का ये अटैक पढ़ा है, अभी आपको बहुत सारी I डिटेल्स don't उसकी know. बताऊंगा। I don't know. यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है और एआई के जरिए इस ड्रोन ने टारगेट किया कि इस एयरक्राफ्ट का वीकेस्ट स्पॉट क्या है। ये जो हम फुटेज देख रहे हैं ये यूक्रेनियन ड्रोन की है, सुसाइड ड्रोन है। ये चेक कर रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का वीकेस्ट पार्ट कौन सा है। तो ये जो विंग वाला एरिया है ना, इसको आइडेंटिफाई करेगा ये अभी कि ठीक है ये इलाका है, यहाँ पे इसको जाके गिर जाना है। और ये इसने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर ये एरिया। And it just shows just how unprepared, like all this footage, and these drones aren't like super fast or anything, but it just shows how unprepared Russia was. और उसके बाद जो एक्सप्लोजन की वीडियो है ऑब्वियसली वो सामने आएगी नहीं हमारे, क्योंकि फिर वो ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट इस लेवल की ड्रोन वॉरफेयर आज के समय हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में ना। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं रशिया का कि कहाँ कहाँ ये अटैक्स हुए हैं, यू विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। ये जरा आप लोग देख पाओगे रशिया का मैप ना। जानता हूँ आप कहोगे यूक्रेन तो यहाँ पे है, और जो अटैक हुए हैं ये ऑल ओवर रशिया हुए हैं। अब फॉर Mm-hmm. एग्जांपल जो ये ड्रोन वाले अटैक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जो मेन अटैक है जहाँ पे रशिया को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, वो साइबेरिया रीजन जो है ना रशिया का, यहाँ पर चाइना की बॉर्डर के करीब इधर अटैक हुआ है। बाकी आप देखोगे कई अटैक इनके नॉर्दर्न एरिया पे हुए हैं, पोर्ट के आसपास हुआ है। कई जो इनके सबमरीन बेसिस थे वहां पे ड्रोन अटैक हुए हैं। मॉस्को रीजन के आसपास का जो इलाका है वहां पे ड्रोन अटैक हुए हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा डीप इनसाइड रशिया है, क्या ड्रोन यूक्रेन से ऑल द वे रशिया इतना दूर चला जाता है? नहीं, यहां पर देखिए यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया है जो आई थिंक दुनिया भर के हर देश स्टडी करेंगे। यूक्रेन ने यह सब किया है एक ऑपरेशन के अंडर। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। और आज के समय आप अगर वर्ल्ड मीडिया देखो Oh, okay. All right. That explains the thumbnail. I was like, what does it do with the spider? But spider's web. Got it. तो हर जगह ही ऑपरेशन स्पाइडर वेब के चर्चे आपको मिलेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने किया यहाँ पर क्या है, इन लोगों ने 1.5 साल तक प्लानिंग करी इस ऑपरेशन की। जी हाँ, 1.5 साल लग गए ऑपरेशन को प्लान करने में। यूक्रेन ने पहले क्या किया कि इन्होंने चुपचाप जो ये ड्रोन्स है ना ये पहले पहुंचाए रशिया की धरती में। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ बहुत ही मुश्किल ये प्रोसेस रहा होगा। इन लोगों ने पहले ये ड्रोन्स फ्लाई करके रशिया का जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर कहीं पहुंचा दिए होंगे, और फिर उसके बाद डेफिनेटली रशिया के अंदर ही कई गद्दार लोग होंगे जिन्होंने ये ड्रोन ट्रक में रखे। ट्रक से उसके बाद जो ये ड्रोन्स हैं रशिया के विभिन्न इलाकों में, मॉस्को के पास, ये यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में, साइबेरिया में, हर जगह ये ड्रोन्स लेकर गए। और जब ड्रोन्स सारे बिल्कुल प्लेस हो गए, ये जो गद्दार लोग थे ये गायब हो गए, और फिर ट्रकों से ये ड्रोन निकले हैं और रशिया के एयर बेसिस पर इन ड्रोन्स ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए। And that's I mean, he's saying yeah, these people that were traitors to Russia essentially drove these drones through Russian territory to these locations. And you got to ask yourself, I mean, are there traitors in the mints in the mints a mint, what is the word I'm looking for? What is the word I'm looking for? Amongst? Are there traitors amongst? Oh my god, dude. Intermixed or amongst. That's those I was thinking of those two words and I mixed them together. Anyways, like I was saying, are there any traitors intermixed or amongst in your nation? I've been following. Well, of course there is in the U.S. If you didn't hear about the U.S., there's always something happening in the U.S., right? But I follow India quite a bit. I have a deep love and appreciation for India, and I have seen some unfortunate hatred from the inside as well. Some people that have aligned with Pakistan or aligned with Bangladesh, and it's very unfortunate. But yeah, I mean these are the type of people you definitely want to have to be wary about. Yeah, I don't know. This type of deal is just it changes the game for warfare forever, honestly. And I say that, and I realize, this happened back, during the Trojan War, but
I mean, it's not nothing to the scale yet. That's why it's been so talked about. I guess the closest thing would probably potentially be like Israel with the pager attack that happened last year. That's probably the next closest thing to this. जब ये ड्रोन्स ट्रक से निकल रहे थे उसकी भी वीडियो सामने आई है। ये इधर ये ट्रक देख रहे हो आप, Yeah, here it इसके is. This is अंदर the बहुत footage सारे where ड्रोन like थे it flies जो out. अटैक Like the top, there's like photos of the drones inside of the top, and basically this, yeah, like the top slides off or pops off somehow, and the drones just take कर off, सकते and हैं they're so या slow as आत्मघाती अटैक भी well. कर सकते हैं। दोनों टाइप के ड्रोन्स थे। अब देखोगे यहाँ पे आप इस Now तरीके look, से look how ट्रक से ये slow ड्रोन they निकला। are. ये ट्रक पार्क कर दिया गया रशिया के एयर बेसिस। And seeing the footage of the drones, it's like these drones are like cheap drones. These are like commercial drones. Like you can go on to buy it like a store. Like here in the US, you can go on Amazon or go to like an electronics store and just buy a drone that looks like this easily. They seem super cheap, like a few hundred USD. मिलिट्री फैसिलिटी के पास ट्रक में से ड्रोन निकलता है और फिर एक एक करके जैसे मैंने आपको बताया इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज पर। नाउ ऐसा ऑल ओवर रशिया हुआ है। रशियन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, इनकी सरकार, सब लोग शॉक में है। व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है क्योंकि अगर हम बात करें ओवरऑल नेट वैल्यू की, ये अब तक का सबसे महंगा अटैक किया है यूक्रेन ने रशिया पर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इवन दो वैसे यूएसए क्लेम कर रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से, मैं नहीं मान सकता Yeah. कि बिना सैटेलाइट इमेजेस के, बिना प्रॉपर डेटा के Well, यूक्रेन इतना बड़ा Ukraine even came out and said that the US had nothing to do with it. So अटैक कैरी आउट कर सकता था। ये यूक्रेन के जनरल हैं, आप देख रहे हैं एयरबेस के मैप स्टडी कर रहे हैं जिसको यूक्रेन ने अब डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आप खुद देख पाओगे ये लोग प्राउडली आज के समय दुनिया को बता रहे हैं 1.5 साल की प्लानिंग लगी, मगर जब ये प्लान कंप्लीट हुआ क्या इंपैक्ट आया है इसका। हालांकि आप अगर मुझसे पूछें, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं एक बात को लेकर कि अब मैं पहली बार देख रहा हूं रशियंस ना खुलकर कह रहे हैं यूक्रेन का कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। मैंने कमेंट्स देखी है रशियंस की आर्टिकल्स में, मैं आपको दिखाता हूं। ये इधर आप देख पाओगे आर्टिकल में लिखा है कि कई जगह जो रशिया की ट्रेन है ये भी कोलैप्स करी है। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भी यूक्रेन का हाथ है, यूक्रेन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सैबोटाज किया होगा। और मैं हमेशा मानता हूँ किसी कंट्री का सोशल मीडिया हमेशा स्टडी करो, मेजोरिटी वहां पर क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के केस में ना मैं लगातार देख रहा हूँ एक के बाद एक सारी कमेंट्स कह रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन कौन सी बातचीत कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। अभी आपको पता होगा, एक बताया जा रहा है इस्तांबुल में मीटिंग होनी थी रशिया यूक्रेन की, अब पता नहीं उस मीटिंग का क्या होगा। लोग कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, इक्विपमेंट बिल्डिंग्स ये सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्लीन एवरीथिंग क्लीन, दे हेट अस। नीचे एक आदमी कहता है द करंट यूक्रेन मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, हु डजंट अंडरस्टैंड दिस। अब मैं देख रहा हूँ रशियन मेजोरिटी का गुस्सा ना पुतिन पे इसलिए आ रहा है, पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स क्या सजाने के लिए रखे हैं? जब यूक्रेन ये सब कर रहा है तो रशिया कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं यहाँ पर लेता? do you think that this will push Russia into using nuclear weapons? I don't know. I think there'd be too big of a ramification if they were. They're like Russia isn't like Pakistan, where if Pakistan is forced ever so slightly, they would probably do it. Russia would. I don't know. I don't know. Like the whole world would turn against Russia if they did it, for sure. You know what? I've said it multiple times, but I'll say it again. I think we've been in World War III for several years now, and we don't know of it. Like during World War I, they called it the Great War. They didn't realize it was World War I, and then of course World War II. They didn't realize they were in World War II. I don't think we realize we're in World War III, and just the scale of it is just ramping up, getting bigger and bigger. We'll see. इधर आप देख पाओगे जो कमेंट्स है रशियंस की, बात है ये ट्रांसलेटेड है, मैं आपको ट्रांसलेटेड दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी समझ पाए। एक आदमी कह रहा है कि जी यूक्रेन में नाजीज्म बहुत बढ़ गया है और ये लोग सब नाजी बन गए हैं। ये कमेंट देखो, वी मस्ट स्ट्राइक सो हार्ड दैट द वूल फ्लाइज इन द क्लम्स। और आप इनके और सोशल मीडिया में देख लो, इनके जो इन्फ्लुएंसर है वगैरह, वहां पे ना सब लोग अब व्लादिमीर पुतिन पर मतलब सार्कास्टिक वे में प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम करते क्यों नहीं हो, कुछ बड़ा स्टेप लो ना। ये अभी भी रशिया ने वैसे इसको एक ऑपरेशन ही मान रखा है, रशिया इसको वॉर कहता नहीं है। इनके लोग कह रहे हैं वॉर की तरह ही ट्रीट करो, डिस्ट्रॉय कर दो यूक्रेन को, नहीं तो इस तरीके से पूरा देश बर्बाद कर देंगे हमारा। और इस अटैक के बाद मैंने ये देखा है कि कई लोग डोनाल्ड ट्रंप की जो एक पुरानी ट्वीट है, कुछ दिन पुरानी ट्वीट, इसको वापस इवेल्युएट कर रहे हैं। Of course, of course, of course. Yeah. I mean, the Ukraine said the U.S. had nothing to do with it. I mean, that's coming from Ukraine. कि यहाँ पर ट्रंप ने ना वार्निंग दी थी रशिया को ना, ये यहाँ पर बात ट्रंप सही कह रहे हैं।
रशिया इज प्लेइंग विद फायर और ट्रम्प के हिसाब से इन्होंने काफ़ी हद तक यूक्रेन को रोक कर रखा और जो रशिया अब लगातार अटैक कर रहा है, सीज फायर की बात नहीं कर रहा, तो कुछ बुरा हो सकता है। मैंने काफ़ी बार बुरा होते हुए रोका है, ये सिग्नल दिए थे ट्रंप ने, तो क्लियरली मैं इमेजिन कर सकता हूँ यूक्रेनियंस ये बड़ा प्लान लेकर 1.5 साल से वेट कर रहे थे यूएस के अप्रूवल का। इन दी एंड लग रहा है कि ट्रंप ने बोला है कि व्लादिमीर पुतिन मेरी सुन नहीं रहा, सो डू व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है जो आज के समय यहाँ पर हुआ है, क्योंकि पूरे भारत में मैं आपको बता दूं 15 इंडिविजुअल्स हैं जिन पर आज के समय जांच पड़ताल चल रही है, इन पे आरोप लगे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। Some ISI spies, right? Since the aftermath of the Pahalgam terror attack, India's retaliatory strikes under Operation Sindoor, Indian counterintelligence agencies have been on high alert. Over the past month, at least 15 individuals across Rajasthan, Maharashtra, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, and Punjab have been detained or arrested. An engineer in Mumbai sketching warship blueprints after being honey trapped. That's pretty common, right? The honey trap stuff. Wow, okay. विभिन्न रिलीजियस कम्युनिटी के लोग Crazy. यहाँ पे आपको मिलेंगे, विभिन्न एथनिसिटी के लोग Crazy. मिलेंगे, राजस्थान के हैं, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, यूपी के, गुजरात के, पंजाब के, इन सबको अरेस्ट किया गया है। कोई पैसे के लालच में कर रहा था, किसी को जी इंटरनेट पर प्रेम हो गया था, आज की हो गई थी। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए एक ऐसे आदमी की जिसने इंडियन नेवी की जो लोकेशन है ये लीक कर दी थी। हनी ट्रैप हो गया था, ये इंटरनेट पर आशिकी हो गई थी और आशिकी के चक्कर में इसने सारी जो ये लोकेशन है ये सब लीक कर दी। इट इज अ हॉरिबल केस। उसकी माँ Just you got to be careful, guys. You got to be careful. Listen. You got to be careful who you talk to online, okay? All those young guys, all those old guys, everyone. I know I'm saying as if like you're talking to guys, but if you're talking to anybody, I'm referring to anybody. You just got to be careful. आज के समय रो रही है कि मेरे बेटे को माफ कर दो, फंस गया इस सब में ये। बट ये जो पूरा अटैक हुआ है ना रशिया में, ये देखकर जेन्युइनली कंसर्न यहाँ पर ये आता है कि इतनी आसानी से आईएसआई भारत में जासूस खरीद रहा है, ऑर्डिनरी इंडियंस इनके लिए जासूसी कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरा मानना है वी हैव टू बी सुपर केयरफुल, क्योंकि ऐसे अटैक्स में ना आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा, रशिया का हैवी लॉस यहाँ पर इसलिए भी हुआ है क्योंकि अगर ये ड्रोन यूक्रेन से आते तब तो S-400 इनके जो बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव रहते। जब इंटरनली आपके देश से ही कोई ड्रोन उठ के आ जाए ना, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी धरा का धरा रह जाता है। So this is the case study That's what I'm saying. That's what I'm saying. Like, what are you gonna do? So, I do believe after this attack, Russia came out and said they had a laser defense system that they'll probably implement at every single military facility. I think every military facility around the world will implement this laser defense system. And it's like it's similar to like what Israel has and a few other countries have to shoot down drones, but a little too late for Russia here. we Indians should study as well. I think दुनिया का हर देश ही स्टडी करेगा। कमाल का अटैक है, आई मीन डीप प्लानिंग, और जो नाम रखा है इसका स्पाइडर्स वेब सोच के ही रखा है। व्लादिमीर पुतिन डेफिनेटली इसके रिस्पांस में कुछ बड़ा करेंगे। कुछ अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए काफी बार PD10, everyone. He doesn't have the PD10 on the screen anymore. Like what is this? There's no PD10 on the screen. Come on. Where's PD10? All right, PD10 right here. Use code PD10. Anyways, moral of the story: any attack is possible only from inside support. Yeah. The war will be going to be very serious now. I mean, it's already been pretty serious. If this could happen with Russia, as Indians, we should be concerned. If we have our way, the whole army of traitors will be ready. This is actually very concerning, as traitors are there in India as well. We need to protect all our army, air base, navy base. Surveillance needs to be increased. The Qadar is heavy, as Indian also feel that. All eyes on. Oh yeah. Shramrista. I don't know if I said her name correctly, but I was reading up on this as well. Yeah, she was jailed for, I guess, insulting Islam in West Bengal. Crazy. Internal security is very, very important for India. Ukraine should be now ready for the consequences. May the gods watch over you too, sir. I think it's a big mistake done by Ukraine. What do you mean? They destroyed so much.
Yeah, Ukrainians. This is huge for Ukraine. I understand, India supports Russia, right? But like for on a Ukraine thing, this is not a mistake from Ukraine. Strong nation is that which educates its children with the values and culture along with the competence. What is this? What is this? I don't know. I don't know. I don't know. We have 30 crore enemies inside only. Hmm. This is insane. This event could change the whole war situation. It already has. All eyes. Yes, yes, yes. All right. I'm gonna see if there's any newer comments. Russia now takes the tag and changes it. I don't know what that means. Now there will be a game of death. Uncle Putin, whatever stock of 4,000 rupees is there, break one or two. What? I think the translation is having a bit of an issue there. Don't call me a traitor. You could be an agent of Ukraine. Huh? Throw out Bangladeshis. What will happen now? Who knows? U.S. Pearl Harbor attack, 5.5 billion USD worth of military assets lost. Operation Spiderweb, approximately 7 billion USD worth of military assets lost. Ukraine informed U.S. before drone attack. No, I'm pretty sure Ukraine came out and said they did not inform the U.S. Before the attack. So, okay, man, it's crazy. It's crazy, is all I can say. PD10, everyone. Link to the video is in the description down below. I'll catch you on the next one, yeah? Take care. Goodbye.